Hello dear students, we are going to start angle and its measurement exercise 1.1. See in question number 2, convert the following angles into radian. So the angles are given in degree, you have to find it in radian. You know the conversion that 1 degree, see x degree is equal to, you have to multiply by factor pi upon 180, that is pi x upon 180 radian. So you multiply by pi upon 180, so it will be in radian. So x degree is equal to pi x upon 180 radian. So let us take this example, that is question number 3. What is the angle? क्या है एंगल -132 डिग्री. तो इसको आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में. मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180. सो 132 इंटू पाई अपॉन 180. इसको हम रिड्यूस करेंगे. माइनस ऑफ 11 इंटू 12, दैट इज 132 पाई. डिनोमिनेटर में 12 इंटू 15 फैक्टर्स आपको याद रखना है. 180 is 12 into 15. So now you will reduce it. This 12 we cancel, and here you are getting the answer is equal to what? -11 pi upon 15 upon 15. So this is in what? Radian. Then next question, fourth question, 65. See here, fourth question, 65 degree 30 minutes. You know 30 minutes is equal to 1/2 degree. 65 degree plus 1/2 degree. तो इसको हम प्रॉपर फॉर्म में लिख सकते हैं 65.5 डिग्री. ये कंप्लीट डिग्री हो. अब इसको हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय पाई अपॉन 180 radian. Now here if you multiply it by 2, then it will be equal to 65.5 into 2. यहाँ पर पाई अपॉन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. सो 180. तो ये होगा, here it will be 131 upon here 360 pi radian. So this will be get converted into 131 upon 360 pi radian. Next example is 75 degree 30 minutes. Here this is what example 5, that is 75 degree 30 minutes. Again 30 minutes is 1/2 degree, so it will be 75 degree 75 point, see 30 minutes means 1/2 degree is 0.5. so complete degree. इसको हमें पाई अपॉन 180 रेडियन से मल्टीप्लाई करना है. सो पाई अपॉन 180, so it is get converted into radian. Now
this is equal to, if we multiply it by 2, then this will be 151 upon 360 pi radian. Next is here the question is 6th question. (40°) 48 minutes. Here 40° 48 minutes. Now 40° plus 48 minutes. 48 minutes को हम we will convert it into degree. We will divide it by what? 60. That will be degree. Then reduce it. It is 4 upon 5. So this will be equal to 40° plus, here this will be 0.8 degree, means it is 40.8 डिग्री. तो इसको हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में. 408 upon multiplied by 100 into pi upon this multiplied by 10. Here it is 408 upon 10 multiplied by pi upon 180. So this is get converted into radian. Now this will be equal to 408 upon 1800 pi radian. Now you can further simplify it as, see, इसको हम 9 into 2 into 100 लिख सकते हैं. Now this is 4 या 8 into, here we can multiply it by 8 into 51 pi radian. So we will reduce it. See, this is what 8, यहाँ पर 25 only 2, मतलब 8 into 25, that is 200. So this will be equal to 51 pi upon 9 into 25 radian. Now again we reduce it. इसको हम आगे reduce करेंगे. So it is 17 pi upon, okay, this is getting cancelled, यहाँ पे आएगा 3 and ये 75 आएगा radian. Yes. So it is get converted into radian. So how much radian is? 40° 48 minutes. That is equal to how much? 17 pi upon 75 radian. Then we'll do the next question. Here, convert the following angles in degree. So we use this relation pi radian is equal to what? 180 degree. Pi radian is equal to 180 degree. So we use this relation. Pi radian is equal to what? 180 degree. Now here the first question is what? 7 pi upon
12 रेडियन। तो इसको हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो विल कन्वर्ट इट इनटू डिग्री। 7/12 इंटू पाई रेडियन, पाई रेडियन इज 180 डिग्री। तो हम इसे डिवाइड करेंगे, दैट इज इक्वल टू 15 इंटू 12, दैट इज 180। So it will be 105, 15 into 7, 105 degree. So yes, it is get converted into degree. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, -5/3 पाई रेडियन। तो इसे हम लिख सकते हैं -5 इंटू पाई/3 रेडियन। And you remember this, pi/3 radian is equal to 60 degree. Pi/3 radian is equal to what? 60 degree. So it will be -300 degree. Now let us convert this pi radian. Now see here, pi radian. तो इससे कन्वर्ट करना है हमें डिग्री। सो 5 इंटू 180 अपॉन पाई। 1 रेडियन इज इक्वल टू, here 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। is a factor we multiply to convert into radian into degree. We multiply by 180 upon pi. So we have multiplied it and it is converted into degree. Now this is equal to 5 into 180. This pi you can write as 22/7. So 7 will be over here. It is equal to, see this is get converted into degree. So it is 5 into 90 into 7 upon, this is 11. It is degree. So we simplify it further. So the answer is sufficient, that 900 upon pi radian. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डू -1 upon 4 रेडियन, दैट इज इक्वल टू -1 upon 4 into 180 upon pi degree. This will be equals to minus, see this is 45 upon pi degree. So we have converted it into radian into degree. So -45 upon pi degree. Now the next question is, express the following angle in minute and second. So express the following angles in minutes and second. So let us attempt this. 183.7 degree. So this angle we convert it into डिग्री, मिनट एंड सेकंड। तो यहाँ पर 183 जो है ये कंप्लीट डिग्री है, प्लस व्हाट 0.7 ये डिग्री। नाउ 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो इसे हमें 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। 183 डिग्री प्लस 0.7 into 60, so it is get converted into minutes. 183 degree plus, this is 42 minutes. So it will be 183 degree 42 minutes. Yes. See the next one is 245.33 degree.
See here. Next question is 245. ये complete 245 degree plus 33.33 डिग्री, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 60 से। 245 डिग्री प्लस 0.33 into 60, so it is get converted into minutes. यह आएगा 245 डिग्री प्लस this is what, so it is 19.8 minutes. Now 19 minutes are complete minutes. See here. So again this will be 245 degree 19 minutes plus 0.8 minutes, we multiply it by 60, so it is get converted into second. So it is 245 degree 19 minutes और ये 48 second. So the angle is get converted into degree, minutes and second. The next angle is 1/5 radian. So let us convert it into 1/5 radian into डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड। तो सबसे पहले हमें इसको कन्वर्ट करना होगा। सी हियर, रेडियन वी कन्वर्ट इट इनटू डिग्री। सी हियर 1/5 रेडियन, so we will convert it into degree. So it is 1/5 into 180/5, ये होगा डिग्री। Now it is 36, so this we cancel it. So 36/pi. Pi radian is 22/7. Okay, so it is in degree. This will be equal to 36 into 7/22. ये कन्वर्ट हुआ डिग्री में। This will be equal to 118 into 7/11 is got converted into degree. So it will be 126/11 degree. Now we divide it into we divide it by 11, so it is 11. Okay, so how much is the remainder? So 11 degree plus how much is the remainder? 5/11 ये डिग्री। तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 5/11 into ये स्टूडेंट्स 60 से, so it will be converted into what? Minutes. It will be converted into what? Minutes. अगर हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो, so it will be converted in minutes. Here
Now this will be 11 degree plus 11 degree plus, so you have 300 upon 11, ये मिनट्स में है. Then it is 11 degree plus, okay, it is 2. So how much is the left? See here, this we multiplied by 2, so it is 80. So it is again by 77, मतलब 3 is left. So इतना मिनट्स होगा प्लस 3 is the remainder, 3 upon 11 मिनट्स. इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे. 11 डिग्री 27 मिनट्स प्लस 3 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 11, ये सेकेंड होगा. So it is 11 degree plus 27 minutes plus 80 here upon 11, ये होगा in second. So it will be equal to how much? Now it is 11 degree 27 minutes and plus approximately equals to, it is so it is equal to 11 degree 27 minutes and this is approximately 70 seconds. So yes students, now see we will do this question number Question number 5 we will do now. What is this? In triangle ABC, measure of the angle is this. See, A का measure है 7 pi upon 36 रेडियन. मतलब ये होगा 7 upon 36 into pi. Pi रेडियन is 180. तो ये डिग्री में कन्वर्ट हुआ. Now it is 7 into 5 डिग्री, तो 35 डिग्री होगा. इसको हमने रिड्यूस किया है. ओके, सी दिस 18 2 and it is 5. सो ये रिड्यूस किया तो 5 डिग्री, सो 35 डिग्री. सो एंगल ए इज इक्वल टू हाउ मच? यस चिल्ड्रन, एंगल ए इज इक्वल टू 35 डिग्री और दूसरा एंगल बी दिया है. सो एंगल बी दिया है, इट इज इक्वल टू हाउ मच? 120 डिग्री. सो थर्ड एंगल कितना होगा? तो क्लियरली एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री. सो इट इज 35 डिग्री प्लस 120 degree plus angle C, that is equal to what? 180 degree. So therefore angle C will be equal to what? Therefore angle C will be equal to, ये होगा 60 minus this 35, so it will be 25. So angle C will be equals to 25. Now we want this angle in degree and radian. So ये डिग्री होगा, अभी रेडियन में एंगल C कितना होगा? 25 upon 3 into pi upon 180 रेडियन. ये रेडियन में हुआ. इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं क्या? यस, इट इज 5. ओके, रिड्यूस कर सकते हैं हम 5 and it is
पाई अपॉन ये 36 रेडियन. So the remaining angle is this. Now we'll come to the question number 6. Question number 6 is what? Question number 6, two angles of triangle are this. Here two angles of triangle are 5 pi upon 9 radian and 5 pi upon 18 radian. Find degree and radian measure of the third angle. So here say x angle is equal to how much? 5 pi upon 9 radian. इसको हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में. You know pi radian is equal to 180 degree. 180 degree upon 9. So ये होगा 5 into series we reduce. Okay, it will be 20. तो इस 20 मतलब ये आएगा आपका 100 डिग्री एक्स एंगल. फिर वाई एंगल कितना दिया है बेटा? वाई एंगल दिया है आपका 5 पाई अपॉन 18 रेडियन. सो इसको हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में. 5 अपॉन 18 पाई रेडियन. पाई रेडियन इज 180 डिग्री. सो ये होगा 50 डिग्री. इसको हमें कैंसिल करना है. ये 18 को ये आएगा 10 इंटू 5. अभी रिमेनिंग एंगल जो है जेड एंगल क्या होगा? सो दैट विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस इन दोनों का एडिशन 150 डिग्री. इट इज इक्वल टू हाउ मच? 30 डिग्री. 30 डिग्री. अभी फाइंड डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ द थर्ड एंगल. फाइंड डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ द थर्ड एंगल. तो 30 डिग्री आपको बाय हार्ट रहना चाहिए. दैट इज पाई बाय 6 रेडियन. पाई बाय 6 रेडियन. यस. नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर 7. We'll do now question number 7. In a right angle triangle, the acute angle are in ratio 4:5. Find the angle of triangle in degree and radian. Yes students. So we'll do the next one. See here. Let us consider this right angle triangle. Okay. Look at this right angle triangle. यहाँ पर दो acute angle. Okay, they are in proportion to 4:5. तो हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लेते हैं x. तो 4x एक एंगल होगा और 5x दूसरा एंगल. जो रिमेनिंग एक्यूट एंगल जो है दे आर इन रेशियो 4:5. तो ये एंगल समझो 4x और ये 5x. ओके. हाँ. सो फाइंड द एंगल्स इन. हाँ. तो इन दोनों का एडिशन होगा 90 डिग्री बिकॉज दिस टू एंगल्स रिमेनिंग टू एंगल्स टू एक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट एंगल. सो देयरफॉर 4x plus 5x that is equal to 90 degree. Yes student. So let the angles are 4x and 5x degree respectively. Because the ratio क्या है 4:5. तो ये होगा 9x is equal to 90 degree. 9x is equal to 90 degree. Therefore x will be equal to how much? Therefore x will be equal to 10 degree. So corresponding angles कितने हो गए? So one angle will be, see here 4x will be equal to what? 40 degree. और दूसरा एंगल 5x is equal to 50 डिग्री. इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं. दिस एंगल इन रेडियन. सो इट इज 40 into
pi upon 180 radian. Okay, yes children, so it is 2 pi by 9 radian. If we reduce it, it will be 2 pi upon 9 radian. और ये 50 डिग्री जो है, सो अगेन वी कन्वर्ट इट इनटू रेडियन, पाई अपॉन 180 रेडियन, so it is 5 pi upon 18. After reducing it, 5 pi 18 upon 5 pi upon 80 radian. ये जीरो कैंसिल करते हैं. So these are the remaining two angles in radian. Now we attempt question number. Yes students, we are going to attempt question number 8. See here, question number 8 is sum of two angles. Let the angles are x and y. So their sum is equal to how much? 5 pi radian. You know pi radian is equal to 180 degree. So it will be 5 into 180 degree. So it will be 900 degree. That is x plus y. We'll denote it by equation 1. फिर इसमें their difference is 60. So difference x minus y is equal to 60 आएगा बच्चों. इक्वेशन 2 दोनों का अगर ऐड करते हैं तो we will get 2x is equal to 960. Okay, so this x will be equal to how much? Okay, 960 divided by 2. Okay, it is it's 480 degree. Then see the another angle is will be equal to what? Therefore remaining angle, another angle will be equals to, see here, y is equal to what? Clearly it is 420 degree. So the angles are this. So we want to find their measures in degree only. So one angle is 480 degree and another angle is 420 degree. Now we attempt the question. The measures of angles of triangle are in ratio 3:7:8. Find their measures in degree and radian. Find their measures in degree and. Question number 9. Look at this question number 9. The measures of angles of triangle are in ratio 3:7:8. Find their measures in degree and radian. So let us let the angles are 3x, 7x और 8x. ठीक है. अभी see the measures of angles of triangle. तो सारे एंगल्स का एडिशन होगा कितना? 180. तीनों एंगल्स का मेजर्स 180 डिग्री. सो ये होगा 18x is equal to 180 degree. Therefore x will be equals to how much? 10 degree. So what will be the angles? Therefore the angles are डिग्री में ये एंगल्स क्या होंगे? दैट इज 30 डिग्री. 3 into 10. 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई अपॉन 6 रेडियन. दूसरा एंगल है 70 डिग्री. 70 डिग्री को हम कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, पाई अपॉन
180 से मल्टीप्लाई करो तो इट इज गेट कन्वर्टेड इनटू रेडियन, दैट इज 7 पाई अपॉन 18 रेडियन। फिर द लास्ट एंगल है 80 डिग्री। 80 डिग्री को हम कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, पाई अपॉन 180 रेडियन। So it is 4 pi upon 9 radian. Okay, it is dividing by 2, so it is 4 pi upon 9 radian. तो यस डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक एक्सरसाइज 1.1 का 2 से लेके 9 तक हमने कंप्लीट किया है। So in coming video we will continue the next question of this exercise. Thank you for watching this video.